हेलो। हेलो। हाय। हाय ईशान भाई। क्या हाल चाल, कैसे हो? Hi, thank you so much for joining. Hello guys and welcome back to Football Content Factory. Today we'll be discussing about Man United versus Liverpool preview. I have with me my good friend ईशान भाई। ईशान भाई कैसे हैं आप? मैं बढ़िया हूँ एकदम। आप सुनाइए, आप कैसे हैं? हाउ आर यू? I'm good यार, I'm good. थोड़ा सा बिजी चल रहा है शेड्यूल, बट थैंक यू सो मच ईशान भाई, आपने अपना टाइम निकाला आज। बहुत बढ़िया मजा आने वाला दोस्तों। आज हम लोग श्योर। डिस्कस करेंगे मैन यूनाइटेड वर्सेस लिवरपूल, प्लेजर। प्रीमियर लीग की बिगेस्ट राइवलरी, इन माय ओपिनियन सबसे बड़ी डर्बी है। ईशान भाई आपके थॉट्स? या ऑफ कोर्स हमारी मोस्ट की मैच भी है, बट स्टिल भी अगर आउट इन फर्स्ट व्हाटएवर टाइप ऑफ फर्स्ट मैच जो आप देखते हो तो वही देखते हो कि मैनचेस्टर यूनाइटेड होम और अवे कब है। And since most of our friends are from support either Manchester or Chelsea, so always a huge picture tomorrow. And since around only top ईशान भाई आपका नेटवर्क का प्रॉब्लम चल रहा है क्या? I don't know. ये थोड़ा सा ऐसा लग रहा है कि नेटवर्क इशू है, इसलिए थोड़ा सा प्रॉब्लम आ रहा है। Let's try again, shall we? यस यस, अभी आ रही है। दिस इज मच बेटर नाउ। Okay, fine. I think we lost Ishan bhai, so no worries. I'm sure he will be joining soon again in a minute. Maybe he's just trying to figure out what the problem is उनके network के साथ. But कोई नहीं, we'll wait for him to join again, and that won't be long. I'm sure he'll be joining soon. But again, yes, talking about आज का मैच, which is really important. जैसे ईशान भाई बता रहे थे कि सबसे पहला मैच जो हम लोग देखते हैं, जैसे ही प्रीमियर लीग फिक्सर्स आते हैं, सबसे पहले हम लोग यही देखते हैं कि मैन यूनाइटेड लिवरपूल फिक्सर कभी है। सो मेरे लिए, जब इनफैक्ट सारे लिवरपूल फैंस के लिए आई वुड से, कि जब भी पहला मैच आता है सबसे पहले हम लोग यही देखते हैं कि यार हाँ ये फिक्सर कब है। एंड इसके साथ साथ शायद मैन सिटी और आर्सेनल, चेल्सी, स्पर्स। बट हाँ, सबसे पहली नज़र जो जाती है वो होती है इसी मैच पे जाती है, और किसी मैच पे नहीं जाती है। ये मेरा ओपिनियन है, एंड आई एम श्योर सारे लिवरपूल फैंस एग्री करेंगे कि हाँ ऐसा ही पहले सबसे पहले वो देखते हैं कि जब जब फिक्सर्स रोल आउट होते हैं, तो ये प्रीमियर लीग फिक्सर्स कब है, पर होम लेग, सेकंड लेग, फर्स्ट लेग कब है, एंड सेकंड लेग कब है। आई थिंक ईशान भाई का कुछ प्रॉब्लम आया है उनके कुछ वाईफाई में, तो विल कंटिन्यू विद द स्ट्रीम। बट यस अगेन, मैं जैसे अगर मैं अपनी बात करूं तो मुझे ऐसा लगता है कि जो प्लेयर्स जिस इंजरी से वापस आ रहे हैं, ग्रेवेनबर्च एंड ऑल दैट, मुझे नहीं लगता वो स्टार्ट करेंगे। बट हाँ, एक इम्पॉर्टेंट होगा क्योंकि सारे हमारे जितने भी यंग प्लेयर्स हैं अभी, जैसे बॉबी क्लार्क, या जैसे हम लोग बात करें जेम्स मैककॉनल की, तो हाँ ऑफ कोर्स दे आर गुड प्लेयर्स, बट दे आर यंग, दे आर इनएक्सपीरियंस। सो इट वुड बी नाइस कि यार कोई ग्रेवेनबर्च जैसा जो थोड़ा सा एक्सपीरियंस, ऑल्दो ही स्टिल यंग, थोड़ा सा एक्सपीरियंस है, लाइक, तो आके थोड़ा सा एक्सपीरियंस डाल देगा। एंड ऑब्वियसली इज अ क्वालिटी प्लेयर, हमारे पास इंजरीज इतनी ज़्यादा हैं, तो ऑब्वियसली इज गोइंग टू बी अ बिग हेल्प। ऑब्वियसली एंड साला है, एंड Sabozla is also back from injury, so again that is going to be of big help as well. And it's going to be interesting match होने वाला है, क्योंकि मैन यूनाइटेड के पास भी डालो वापस इंजरी से आया है, एंड देन हॉयलैंड वापस आ गया इंजरी से, एंड if I'm not wrong,
एक और प्लेयर भी है उनका जो इंजरी से वापस आया है, which is like Dallo, Haaland. There's another one which I don't remember, जो उनके प्रेस कॉन्फ्रेंस में टेन हाग बता रहा था कि हाँ हमारे पास 2-3 प्लेयर्स वापस आए हैं इंजरी से, बट इट्स गोइंग टू बी एन इंटरेस्टिंग मैच। और इनसाइड टेक के लिए हम लोग ऑब्वियसली वेट कर रहे हैं ईशान भाई के वापस आने का। लेट्स सी उनका क्या कुछ अपडेट है या नहीं है। अभी तक तो उनका कोई अपडेट नहीं है। लेट मी जस्ट ट्राई टू रीच आउट टू हिम। बट या मैंने उनको मैसेज किया है, देखते हैं अभी उनका जवाब कब तक आता है। बट अगेन बात करूं अगर मैच की, तो इट्स गोइंग टू बी एन इंटरेस्टिंग वन। मैन यूनाइटेड वर्सेस लिवरपूल एट ओल्ड ट्रैफर्ड कभी भी इजी नहीं रहेगा। इनफैक्ट लास्ट टाइम जब जब अगस्त में हमने उनके साथ प्ले किया था, इट वाज अ 0-0 ड्रॉ एट एनफील्ड। सो मेरे हिसाब से फॉर्म ऑब्वियसली गोes out of the window whenever we talk about Man United Liverpool. Obviously Liverpool are second in the league and Man United are wherever like fifth, sixth, whatever. But again even in Sir Alex Ferguson era, जब यूनाइटेड हमेशा टॉप पर होती थी and Liverpool was struggling like a mid table team, and we always gave them a tough fight. So I obviously think that form goes out of the window, especially जब मैनचेस्टर यूनाइटेड और लिवरपूल की मैच होती है। सो या फॉर्म का कोई लेना देना नहीं, एटलीस्ट दिस इज व्हाट आई थिंक। सो इंटरेस्टिंग होगा मैच। साला ने आई थिंक काफी देर खेला था मैच, सबोजलाई ने काफी खेला है। आई डोंट गेट द आइडिया कि लास्ट मैच में नूनेज का खेलना क्यों था, जब वी आर ऑलरेडी लाइक विनिंग 5-1 in the first leg. But obviously it was good to see that we won the leg by 11-2, the overall aggregate score. Sorry, but साला गैप को ठीक है, गैप को समझ में आता है कि उसको गेम टाइम मिला, which is good. Bobby Clark, young player, but I think Joe Gomez, Endo, and then Salah, Nunes को इतनी देर तो खिलाना नहीं चाहिए था। बट अगेन ठीक है, शायद गेम टाइम मे बी वैन डाइक ने खेला के लास्ट 30 मिनट्स, सो थोड़ा सा गेम टाइम एज लाइक ठीक ही है, अच्छा ही है, उनको मिला है। चलो रोटेशन में रहेगा, कहीं पे गैप नहीं है, तो विच इज गुड। बट आई होप कि उससे कोई फर्क ना पड़े कि हाँ बहुत ज्यादा गेम खेल लिया। अगेन द गुड थिंग इज लुइस डियाज डिड नॉट प्ले एट ऑल, सो विच वाज गुड ऑब्वियसली। सो ही विल बी फ्रेश लाइक खेलने के लिए मैच। About Man United, like I said, form goes out of the window जब भी Man United Liverpool की बात आती है। It doesn't matter whether you are on the top of the table, bottom, mid table, कहीं पे भी रहो आप, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि it's obviously Man United and Old Trafford पे भी like even though टीम हमारी कितनी भी अच्छी हो, हमने हमेशा देखा है कि थोड़ा सा डिफिकल्टी होता है हमारे लिए ओल्ड ट्रैफर्ड पे खेलना। आई थिंक ईशान भाई वापस आए हैं, तो उनको बुलाते हैं। हेलो ईशान भाई, वेलकम बैक। Hi again, hi again. हाय, आई होप आपका इंटरनेट शॉर्ट हो गया अभी। Yeah, hopefully. चलिए बढ़िया। तो वही मैं बात कर रहा था ईशान भाई, जैसे कि लास्ट मैच के बारे में, लाइक ऑब्वियसली हम लोग 11-2 एग्रीगेट स्कोर से जीते हैं, बट मुझे नहीं लगता था कि इतने सारे प्लेयर्स को खिलाना जरूरी था, क्योंकि हम लोग ऑलरेडी फर्स्ट लेग 5-1 से जीत रहे थे। साला, न्यूनेज, एंडो, गोमेज, आपके क्या थॉट्स हैं? व्हाट डू यू थिंक? सी क्लोब हमेशा से ही मोमेंटम ही बिल्ड्स इन बिल्डिंग मोमेंटम एंड कैरिंग ऑन मोमेंटम। सो ये इस टाइम की प्रॉब्लम नहीं है। इस टाइम तो चलो हमारे पास इंजरीज भी काफी है, पास्ट में भी हमने देखा है काफी सीजन्स में रेगुलरली हम यही सोचते रहते हैं कि क्लॉप को ये प्लेयर्स नहीं खिलाना चाहिए था। जब जोटा इंजर्ड हुआ था लास्ट सीजन था, पता नहीं शायद उससे लास्ट सीजन था, चैंपियंस लीग के मैच में, इट वाज टोटली इररिलेवेंट गेम फॉर अस। हम शायद उसमें पॉइंट्स ड्रॉप भी कर देते, तब भी कोई पोजीशन, लीग पोजीशन के ऊपर, टेबल पोजीशन के ऊपर डिफरेंस नहीं था। बट क्लोब्स बिलीव्स इन मोमेंटम, सो दैट्स व्हाई आई थिंक प्रोबेबली इसलिए उन्होंने इतने सारे प्लेयर्स को इस मैच में भी, लास्ट गेम में भी चांस दिया। और अगेन इस मैच के बाद एक लंबा ब्रेक मिल रहा है और इंटरनेशनल्स है, बट
इंग्लैंड में तो सिर्फ एक जो गोमेस और साला नहीं जा रहा है इंटरनेशनल के लिए, तो शायद वो चीजें प्ले आउट करी है टोटली, बट ही वांटेड टू बिल्ड अ मोमेंटम फॉर दिस गेम. आई थिंक दैट्स व्हाई ही प्लेड सो मेनी प्लेयर्स. या आई एग्री, बट मुझे ऐसा लग रहा है कि थोड़ा सा साला को जैसे इतने मिनट्स दिए, इतना देने की जरूरत नहीं थी, स्पेशली लाइक जब हम ऑलरेडी इतने अच्छे स्कोर लाइन से थे. बट इट वाज गुड टू सी दैट फर्स्ट 15 मिनट्स में ही लाइक गेम ओवर, फिर भी उसको इतना गेम टाइम मिला है. लाइक इट वाज गुड टू सी. सो होपफुली इज लाइक फिट वगैरह अच्छा हो गया रहेगा अभी तक. एंड लाइक सुपर एक्साइटेड कल कल क्या होने वाला है. व्हाट डू यू थिंक अबाउट कल का मैच, ईशान भाई? सी डार्बी में तो कोई कभी भी प्रेडिक्ट नहीं कर सकता क्या होने वाला है. यू एंड बी अब प्रेडिक्शंस गेट आउट ऑफ द बॉक्स, उस टाइम पे तो नहीं कह सकते. बट स्टिल आई हैव अ फीलिंग कि रिलेटिवली इजी गेम होने वाला है एंड वी आर गोइंग टू विन बाय 2-0. टू स्ट्रेट गोल्स. फॉरवर्ड हो सकता है. Oh, that's interesting one. क्योंकि क्या है, उनके भी इंजर्ड प्लेयर्स कुछ हैं जो वापस आए हैं, जैसे जैसे डालो हो गया, एंड देन आपका हॉयलैंड हो गया, एंड अनदर एक प्लेयर है जो मुझे याद नहीं आ रहा है, बट उनके भी प्लेयर्स वन वापस बिसाका आ इज रहे हैं. बैक. सॉरी. वन बिसाका इज बैक. हाँ, बिसाका, राइट, करेक्ट, वैम बिसाका इज बैक. तो मुझे लगता है कि इट्स गोइंग टू बी टफ कॉल. आई थिंक डालो उनका लेफ्ट बैक खेलेगा, क्योंकि जब भी लिंडलॉफ ने खेला उनके यहाँ पे लेफ्ट बैक, सो इट्स नॉट गोइंग टू वर्क आउट, स्पेशली अगेंस्ट व्हेन यू आर अप अगेंस्ट साला, सो वो तो काम नहीं करेगा. आई थिंक डालो लेफ्ट बैक खेलेगा एंड वैम बिसाका राइट में जाएगा. व्हाट डू यू थिंक? ऑफ कोर्स, और डेलो लेफ्ट बैक से एक गुड उनके पास बॉल कैरियर भी प्रूव हुआ है. लास्ट उन्होंने जो थोड़ी बहुत मैंने गेम्स देखी है यूनाइटेड की, स्टार्टिंग में जब वन बिसाका था या तो जब उन्होंने अहमदाबाद को खिलाना शुरू किया, उससे पहले दे वर गोइंग विद दिस एक्सपेरिमेंट एंड वहां पे अच्छा डेलो एक अच्छा प्रूव हुआ है. एंड सिंस वन बिसाका इज नाउ बैक और डियास की पेस के अगेंस्ट दे आर काउंटिंग ऑन वन बिसाका टू पुट ऑन अ फ्यू टैकल्स और टू शट डाउन दैट साइड. और डेलो की तरफ से मेरे ख्याल से अगेंस्ट लाइक साला के अगेंस्ट तो हाफ फिट तो वो किसी को नहीं खिलाने लगे. एंड अहमदाबाद या लिंडलॉफ दोनों ही प्रॉब्लम करेंगे, तो उनका बेस्ट बेट भी यही रहेगा कि वेन बिसाका को राइट और डेलो को लेफ्ट में खिलाए वो. आई थिंक लुइस डियाज वर्सेस वैम बिसाका इंटरेस्टिंग होने वाला है, क्योंकि वैम बिसाका हमेशा प्रेफर करता है कि जो उसके ऑपोजिशन में विंग में खेल रहा है वो बाय लाइन पे जाए, बिकॉज ही डजंट लाइक समवन टू कट इन जैसे डियाज करता है. सो हिज प्रेफर्ड चॉइस इज कि यार वो बाय लाइन पे आए, तो उसके लिए वो स्लाइडिंग टैकल करना थोड़ा सा इजी हो जाता है, और वो इजी उसका हो जाता है. प्रेफर्ड है. बट समवन कोई कट इन करता है जैसे लुइस डियाज, तो उसके लिए वो थोड़ा सा डिफिकल्ट हो जाता है. सो दैट्स गोइंग टू बी एन इंटरेस्टिंग बैटल एज वेल. एंड जैसा आपने कहा कि साला एंड अगेंस्ट डालो इज आल्सो गोइंग टू बी एन इंटरेस्टिंग वन. ऑफ कोर्स गेम जो है मेरे हिसाब से सेंटर से तो डिसाइड होगी. मैकलिस्टर एंड सबोस्लाई कितना होल्ड कर पाते हैं, बट ऑफ कोर्स विंग पे एक हमारे पास एक एडवांटेज है, क्योंकि देयर विंग बैक्स डोंट फॉल बैक, देयर फुल विंगर्स डोंट डिफेंड एज गुड एज अवर विंगर्स. सो वहां पे एक उनके पास एक हमारे पास एक वीक पॉइंट है एक्सप्लॉइट करने के लिए. बट सिंस वेन बिसाका और especially when Bisaka is purely a defensive full back, so hopefully वो तो यही काउंट कर रहे होंगे कि he can contain Luis Diaz. And like you said कि they are probably counting on the fact that he won't allow Diaz to cut inside on his preferred right foot to shoot. करेक्ट, करेक्ट. और पता है इंटरेस्टिंग टेक क्या होने वाला है कि दे आर गोइंग टू सिट बैक, लो ब्लॉक करने वाले हैं, क्योंकि दे आर नॉट गोइंग टू बी प्ले एक्सपांसिव फुटबॉल. अगर वो वैसा करेंगे तो फिर 7-0 इनकमिंग वाला सीन हो जाएगा उनके लिए. सो दैट्स नॉट गोइंग टू हैपन, राइट? तो इंटरेस्टिंग, वो लो ब्लॉक खेलेंगे और काउंटर बैक. आई थिंक लाइक मुझे ऐसा लगता है कि राइट साइड में जो जो साला वाला साइड है वो ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है. एंड अगेन इट्स वेरी इक्वल, बट क्योंकि रैशफोर्ड एक ऐसा प्लेयर है कि आप अगर उसको नोटिस करोगे ना, तो उसका जो डिफेंसिव वर्क है वो इतना खास नहीं है. लाइक वो इज नॉट रियली इंटरेस्टेड इन द डिफेंसिव साइड ऑफ द गेम. सो ही जस्ट सिट बैक और इज वेरी लेड बैक इन टर्म्स ऑफ डिफेंसिव ड्यूटी. सो इज लाइक ऑलवेज ऑन द काउंटर पे जाएगा, वो पेस के लिए एक्सप्लॉइट करना चाहेगा, बट उसको ये नहीं पता कि डिफेंसिव वर्क करोगे तो आप मतलब अपनी टीम को सपोर्ट करो, विच इज इन फेवर ऑफ यू. बट अगर आप नहीं कर रहे हो तो यू आर ओनली रिलाइंग ऑन डालो टू डू द डिफेंसिव ड्यूटीज. मे बी शायद अमराबाद अगर आएगा सपोर्ट में तो ठीक है, डबल अप ऑन साला एंड ऑल दैट.
तो ठीक है, बट लेकिन वो काउंटर पे खेलेंगे, सो दिस इज गोइंग टू बी इंटरेस्टिंग कि ब्रैडली और रॉबर्टसन या गोमेज, आई थिंक गोमेज खेलेगा इन माय आईज। आपके हिसाब से क्या लगता है आपको ईशान भाई, हु इज गोइंग टू बी प्लेइंग आई लेफ्ट बैक? थिंक आई थिंक मेरे को एक hunch है कि सिमी का स्टार्ट कर सकता है ये गेम। ओह ओके, एनी मतलब हाँ, क्यों ऐसा करना, लाइक गोमेज लाइक रॉबर्टसन? लाइक सिमिकास की एक तो फिटनेस भी बिल्ड करने की जरूरत है, एंड द सेकंड थिंग इज रॉबर्टसन रनिंग बॉल को अच्छा क्रॉस करता है, बट आई थिंक अ डेड बॉल को क्रॉस, और स्पेशली अगर हाइट के हिसाब से देखें, एरियल बॉल देखें, तो सिमिकास इज बेटर एट दैट पॉइंट इन कंपैरिजन टू रॉबर्टसन। ऑफ कोर्स जो गोमेज जो है वो उसका प्रेफर्ड फुट राइट है, सो ही कांट पुट इन दैट मैनी गुड बॉल्स फ्रॉम left back position. So between Robertson and Simicas, मेरे को ऐसा लगता है कि क्लोप कहीं ना कहीं न्यूनीज की एरियल एबिलिटी को वहां पे इनहेंस करने के लिए सिमिकास को शायद शायद स्टार्ट कर सकते हैं। आई थिंक सो। चलिए, ये देखने वाली बात होगी कि सिम्स का स्टार्ट करता है रॉबर्टसन या रॉबर्टसन। जो गोमेज। बट आई थिंक फ्रॉम डिफेंसिव पर्सपेक्टिव अगर हम लोग बात करें, अगर सिमिकास आता है अप अगेंस्ट गर्नाचो, सो दैट इज समथिंग दैट दे विल एक्सप्लॉइट, दिस इज व्हाट आई फील। आपको क्या लगता है अगर अगर सिमिकास आएगा, बिकॉज बिकॉज ही इज ऑल्दो गुड बट ही इज नॉट वेरी गुड। अगर मैं रॉबर्टसन से या मैं जो गोमेज से कंपेयर करूं उनकी डिफेंसिव ड्यूटीज के लिए, इज नॉट दैट वेरी वेरी गुड पेस एंड ऑल दैट, रिकवरी पेस वगैरह भी उसके पास ऐसी नहीं है। तो अगर वो सिमिकास खेलता भी है तो इट्स गोइंग टू बी एन इंटरेस्टिंग बैटल, क्योंकि गार्नाचो इज क्या स्पेस है, तो दे कैन एक्सप्लॉइट दैट। ऑफ कोर्स आपको गर्नाचो के पास पेस भी है, एंड गर्नाचो इस टाइम आई थिंक ही हॉलैंड अभी इंजरी से वापस आया है उनका। अदरवाइज गर्नाचो इज देयर मोस्ट इन्फॉर्म प्लेयर पिछले कुछ मैचेस में, और सीजन में भी सबसे कंसिस्टेंट गर्नाचो ही रहा है। सो अगर सिमिकास या रॉबर्टसन में जो भी स्टार्ट करता है, तो उनको हेल्प की जरूरत तो वहां पे जरूर होगी, थोड़ा बहुत डिफेंस तो वहां पे करना ही पड़ेगा अगेंस्ट देयर मोस्ट इन्फॉर्म प्लेयर। बट आई थिंक दिस इज अ बैटल दैट whoever plays between Simicas and Robertson, he is gonna come out at top. करेक्ट करेक्ट करेक्ट। आई थिंक हॉयलैंड की बात करते हैं थोड़ा। आपको क्या लगता है, इंजरी से पहले ही वाज इन वेरी गुड फॉर्म, आई थिंक ही वाज लाइक top performer in terms of strikers. So he's still only like 20 and last 6 मैचेस में कुछ 6 गोल्स ऐसा ऐसा कुछ स्टैट्स मैंने कहीं पे पढ़ा था। तो इज परफॉर्मिंग एक्सेप्शनली वेल एंड कंसीडरिंग मैन यूनाइटेड जो इतना अच्छा खेल भी नहीं रही है, एंड इट्स नॉट लाइक कि दे आर प्रोवाइडिंग एम्पल अमाउंट ऑफ सर्विसेज कि हाँ यार चलो बहुत सारी सर्विसेज आप उसको दे रहे हो और वो फिनिश नहीं कर पा रहे, इट्स नॉट इवन दैट केस। तो उसको जो लिमिटेड अमाउंट ऑफ चांसेस जो क्रिएट कर रहे हैं विद रैशफोर्ड, garnacho या कैसेमीरो और मे बी टू ब्रूनो एज वेल, तो उस हिसाब से उसने काफी अच्छा परफॉर्म किया। सो इट्स गोइंग टू बी एन इंटरेस्टिंग टेक अगेंस्ट वैन डाइक एंड आई थिंक कोनाटे इज नॉट फिट बट मे बी Konza. So this is going to be interesting. What do you think? सी द थिंग इज कि हॉलैंड के स्टैट्स हालांकि इतने अच्छे नहीं रहे, बट वी एज अ लिवरपूल फैंस we can understand that since we have backed up Nunes so well during his bad times. Correct. But I think there is talent in Holland, definitely. और चाहे प्रीमियर लीग में उन्होंने उसको इतने गोल्स नहीं मिले हैं, बट यूसीएल में हैट्रिक है, और स्टार्टिंग से यूसीएल में जो और एफए कप जो गेम्स थी, कप की गेम्स थी, उनमें एक अच्छी परफॉर्मेंस रेगुलरली दी, प्रीमियर लीग में भी अच्छी परफॉर्मेंस दी है, बट ही हैजंट बीन एबल टू बैक इट विद गोल्स एंड अदर स्टैट्स, असिस्ट स्टैट्स। बट अब फाइनली कुछ टाइम के बाद द मंकी इज ऑफ हिज बैक एंड ही Correct. हैज स्टार्टेड स्कोरिंग। तो आई थिंक he is quite a handful for any defense, but Van Dijk is on another level. जो बंदा हालैंड को वन ऑन वन रोक सकता है, तो हॉलैंड तो क्या ही चीज होनी Holland चाहिए। क्या ही चीज है इसके लिए, सही बात। या हाँ, बट लेट्स नॉट बी टू कॉकी अबाउट दैट कि हो सकता है कि हॉलैंड भी कल को हैट्रिक मार दे, वो इतना भी हवा में नहीं उड़ना चाहिए। बट द थिंग इज हॉलैंड हैज टैलेंट, और अभी ये नहीं पता ना कि हम यूनाइटेड के इतने कॉन्फ्रेंसेस नहीं देखते, तो हम नहीं कह सकते इफ इज फुली फिट और नॉट।
बट डेफिनेटली द बॉय हैज गॉट टैलेंट, और वो किसी भी डिफेंस को एक प्रेशर में लाने जितना काम तो कर सकता है. इज ऑफ द बॉल रनिंग इज वेरी गुड. एंड बट आई विल, like I said, कि I will back Van Dijk all day, like against anyone in the world. Absolutely, absolutely. I think Van Dijk is like Premier League का इस साल best defender है, hands down. I think Saliba and And Gabriel are equally good, but Van Dijk is a level above. Definitely. I think Gabriel has performed a tad bit better than Saliba. Yeah, this Saliba's season I would fanfare agree. is, yeah, in this season, in this season, Yes, Gabriel I has performed exceptionally well. agree. Because क्या है ना, क्योंकि जब सलीबा लोन पे था तो इतना हाइप मिल गया था उसको फ्रेंच लीग में कि हाँ इज वन ऑफ द बेस्ट सेंटर बैक्स ब्ला 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 ब्ला, और गैब्रियल ब्राजीलियन लीग से आया है तो उसको इतना इंपॉर्टेंस नहीं मिल रहा था. सो बट इन टर्म्स ऑफ परफॉर्मेंस गैब्रियल ने इस सीजन तो एटलीस्ट बेटर परफॉर्म किया है इन टर्म्स ऑफ परफॉर्मेंस सलीबा से. Yes, या वैन डाइक इज ऑन अनदर लेवल, definitely. वैन डाइक से कोई कंपैरिजन नहीं कर अब सकते. वैन डाइक से कंपैरिजन, स्पेशली इस सीजन में, जो नहीं पुराने कर. वाला वैन डाइक हम बोलते थे ना, लास्ट गेम में मैन सिटी के अगेंस्ट था, वैन डाइक के लिवरपूल कैरियर में एटलीस्ट मैंने नहीं देखा उसको इतना ग्राउंड पे स्लाइडिंग टैकल मारते हुए जितना लास्ट मैचेस में, लास्ट लास्ट गेम में मैन सिटी के अगेंस्ट. ही वाज ऑन अनदर अनदर लेवल लेवल. इन दैट आई गेम. एग्री. बहुत 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 जबरदस्त परफॉर्मेंस. आई बहुत थिंक जबरदस्त. वो जैसे जैसे क्लॉप से भी एक सवाल पूछा गया था कि यार उसको कैप्टनशिप देने के बाद उसमें आपको लगता है कि यार उसकी परफॉर्मेंसेस ऊपर गई है, तो उसका वही कहना था कि यार उसको कैप्टन बनाना कोई उसकी परफॉर्मेंस एनहांस नहीं करेगी. आई थिंक वो एक बहुत सही पॉइंट है, क्योंकि वैन डाइक हमेशा से एक्सेप्शनल परफॉर्मेंस था, सिर्फ उसका वो जो एक इंजरी हो गई थी उसको, लॉन्ग टर्म इंजरी, उससे आने में उसको टाइम लग गया था. बट नाउ दैट ही इज बैक ऑन ट्रैक एंड मे बी टू अ सर्टेन एक्सटेंट, आई डोंट नो कि उसको कैप्टनसी मिलने की वजह से या लीडरशिप क्वालिटीज की वजह से वो शायद और ज्यादा बेटर कर रहा है. आई डोंट नो दैट, बट या ही दिस सीजन ही इज बीन वेरी गुड, वेरी गुड. सो आई ऑब्वियसली बैक हिम अप अगेंस्ट हॉयलैंड. बट इंटरेस्टिंग बैटल होने वाला है, देखते हैं क्या होता है. सो अगेन क्योंकि क्राउड वगैरह होने वाला है, ओल्ड ट्रैफर्ड है, you can never predict what's going to happen. But So one thing I want to say, like one thing before you say, like I wanted to say, like we discussed how United will sit back. I don't think United have an option of sitting back in this game. They are the home team. They obviously have to play a bit. Otherwise, crowd be क्योंकि they haven't got results in this season, और UCL भी उनका मुश्किल ही लग रहा है. इवन दो अगर फिफ्थ प्रीमियर लीग को 5 प्लेसेस भी मिलती है चैंपियंस लीग के लिए, बट आई स्टिल डोंट थिंक कि वो फिफ्थ पर भी आ सकते हैं. So definitely there is pressure on Ten Hag, and Jim Ratcliffe is going to be in the stadium. So they have to come out and they have to play. Otherwise, ये सीजन के एंड से पहले भी could be curtains for him. I agree. That's a very good, very good point. अगर 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 एनफील्ड पे होता तो तो हम कह सकते थे कि हाँ दे विल सिट बैक एंड एवरीथिंग, बट स्पेशली सिंस दिस इज अ कप गेम, since this is a cup game, they have to come out and play. राइट. बट अगेन इंटरेस्टिंग होने वाला है मुझे ऐसा लगता है, क्योंकि मोस्ट ऑफ द पोजीशन आई थिंक लिवरपूल के पास लिवरपूल के पास ही होने वाला है. बट अगेन इंटरेस्टिंग बैटल होने वाला है. ईशान भाई, कंबाइंड 11 की बात करते हैं. आपके हिसाब से कोई ऐसा प्लेयर है जो जो मैन यूनाइटेड का लिवरपूल की टीम में आएगा? मेरे हिसाब से तो कोई नहीं है. नॉट इवन हॉयलैंड, हु इज लाइक इंजरी से पहले ही वाज ऑन अ वेरी गुड रन ऑफ फॉर्म, पर्पल पैच था. बट स्टिल मेरे हिसाब से तो अगर मैं बात करूं, गोलकीपर कैलेहर इज बेटर. राइट बैक defensively I would say Van Bissaka is better obviously, but Bradley is still young, you know. अगर मैं सेंटर बैक्स की बात करूं तो अगेन there is no nothing to talk about, like Van Dijk and Konate hands down. अगर Konate obviously injured है तो वो तो नहीं, but Konza भी I would say if I have to pick between Konza and Varane, probably I'll choose Varane this season, because क्योंकि For his Konza, experience. yes, for all his like experience and all that. I think only player is Varane who gets along with the center back, but apart from that, midfield में Casemiro नहीं. I would rather choose Endo. Left back I will go for Robertson, Gomez or Semigas above Luke Shaw or Dalot, obviously, right?
मिडफील्ड में भी मुझे नहीं लगता कोई आता है. सोबोस्लाई, Endo and McAllister, उनका Casemiro, Bruno, and probably third one Amrabat. No, none of the strikers. Hoyland नहीं, Nunes I prefer. I'll go for Salah obviously and Luis Diaz on the left. So आपके हिसाब से कोई आता है? Like I think though if we are talking at this very particular moment, अगर हम टॉप 11 मतलब पूरे सीजन की बात करें तो इट्स अ वॉश आउट लिवरपूल प्लेयर्स के साथ. अगर एडम वेरी दिस मोमेंट में बात करें तो दो जगह पे चांस है. आई थिंक राइट बैक पे अगर आप डैलो को ट्राई कर सकते हैं इन प्लेस ऑफ Conor Bradley, and there is just this due to his experience. And that being said, Dallo is probably their best player at this moment. और दूसरा और वो वो ब्रैडली डालो. के अगेंस्ट दूसरा सोबोस्लाई, आई डोंट थिंक दैट ही हैज लाइक he is fully fit in form at the moment. That's why you can try like maybe Bruno Fernandes at this position. That is only because Soboslai is not fully fit at the moment. That's it. Next week, अगर हम बात करेंगे, Curtis Jones will be back, and maybe there is a chance we can even start Elliott in front of Soboslai. But Soboslai is our like priority midfielder. Uh, but at this very moment, Elliott and maybe Bruno Fernandes come in front of Soboslai. Okay. Bruno, I think मतलब it's like overhyped player. मुझे मुझे like I have never liked this guy. Obviously his antics and all that कि यार pitch पे रोता ये वो करता है. But again, in terms of player, I have never really rated that guy. He was like just a penalty merchant. That's about it pretty much. उसके अलावा तो कभी like not exceptionally delivered performance week in week out मैंने कभी उसको regularly देखा नहीं है. Maybe in his first 12 18 months जब वो penalty लेता रहा सिर्फ and all that, maybe he was a little bit better. But in terms of अभी तो I would rather choose Endo, Jones, and Szoboszlai ahead of him definitely. Like even though Szoboszlai has not been in the greatest of form, I think that's because it's like more like tactical reason rather than anything else. जो Szoboszlai perform नहीं can obviously injury है ये है वो है. But overall अगर मुझे choose करना होगा तो I would still choose a Liverpool player ahead of Bruno Fernandes. Not because I don't like him, but I think our midfielder has performed better. If I have to pick anyone above Bruno, it's as simple as that. Do you remember the Gary Neville show overlap? This in the beginning of season, Gary Neville said that Klopp will, in an instant, take United's midfield over Liverpool's midfield. I think we had just recently signed McAllister at that point, and he made that comment on the overlap that Klopp will, in an instant, choose United's midfield over Liverpool's. If अगर He अगर actually said that. नेविल ऐसा लगता है कि he'll choose Bruno Casemiro ahead of McAllister who's won a World Cup, then God only help him. उसका मतलब कुछ कुछ इलाज नहीं हो सकता उसका, फिर तो मतलब कोई ऑप्शन ही नहीं है, उसके आगे कुछ बोल ही नहीं सकते. सही सही बात है. बट अगेन लास्ट जब एनफील्ड पे गेम था लिवरपूल यूनाइटेड 0-0 वाला, तो उसके पिछले मैच में जब ही गॉट येलो कार्डेड ब्रूनो, I tweeted at that time that Bruno getting suspended for the Liverpool game is actually a bigger disadvantage for Liverpool rather than United, Right. because he is one of the guy who like actually don't believe in formations. अगर उसको, if you watch him closely, he presses. It's not like that he doesn't do running and everything, but he's a headless chicken. He runs everywhere on the pitch and doesn't actually contribute to anything substantial for his team. Correct. Absolutely. Maybe Klopp can coach him that. Maybe anyone else can bring the best out of him in that manner. But at this very moment, I don't think that he fits in Liverpool team at all. But like I said, if Soboslai has थोड़ा सा भी थोड़ा सा और like एक दो वीक और बाद ये गेम होती तो definitely it was him over Bruno. But maybe I will Absolutely. retract Soboslai over Bruno again. चलिए कोई नहीं. So coming down to the final stage, Ishan bhai, let's talk about prediction. You already said that 2-1
Do you still think it's going to be 2-0? Sorry, or is it Yeah, 5? yeah, 2-0. I think 2-0 based on the form and everything. And since it is their home, but I am saving some of the goals for the Premier League game too. Like if we are scoring five against them, so I want two here and three there rather than four in this game and be a derby game, derby and to bring a derby and to that game. So hopefully a simple 2-0 will it is, and we can put our feet on the sofa by halftime and that's it. That would be so amazing, like, but मेरे को लगता है ऐसा कि थोड़ा सा tough होने वाला मैच. It's not going to be that easy, so I'm gonna go for 2-1. But you know what, सबसे ज्यादा इंटरेस्टिंग क्या रहेगा कि जब क्लोजिंग मिनट्स में अगर हम लोग विनर मार देते हैं तो इट्स लाइक, लेट्स से फॉर एग्जांपल 1-1 चल रहा है एंड यू maybe Nunes or Salah scores a winner in 88th, 89th, or like stoppage time minute. That would be dagger in the hearts of United supporters. That would be nice. But I predict a 2-1 score line. Yeah, the perfect scenario would be like us scoring early and then maybe scoring in the 60th minute and keeping them at bay and at us arm's length all game so that they know that we have uh, there's level we are levels above them so that they get demoralized for the league game that is coming up. और इतना भी नहीं कि दैट डे मतलब कई बार होता है ना कि इफ यू आर प्लेइंग अगेंस्ट ल्यूटन और सम स्मॉल टीम तो क्लॉप की हमेशा फिलॉसफी रही है वो अंडरडॉग सीज वाली सो वी डोंट हैव वी कांट गिव देम मोमेंटम होप और इतना उनको दबाना भी नहीं है कि वो प्रेशर कुकर वाला स्टेटमेंट उनके साथ हो जाए कीप एट देम एट आर्म्स लेंथ एट ऑल पॉइंट इन द गेम एंड स्कोर अर्ली एंड दैट्स इट. Let's hope that's the case. Who do you think is going to be on the score sheet? Nunes, Brace. Nines Brace. Okay, I'm gonna go for. I really want to see actually Endo on the score sheet. I don't know why. मेरे को लगता है कि यार एंडो को मैं स्कोर शीट पे देखना चाहता हूँ. So I'll go for About time. Nunes and Endo. And Nunes from and there, Endo. it's going to be a Bruno penalty. I don't know why. I think it's going to be a Bruno Bruno penalty. penalty. Bruno So penalty. Yeah. are we winning in the last moment or like we are going 2-0 up and then they are rekindling a last hope or something like that? So for the sake of my heart, I would prefer कि यार 50-60 minutes में हो जाए तो आराम से बैठ के chill करेंगे. But in terms of excitement, edge of the seat, तो obviously last minute winner prefer करूँगा. But if I have to choose between the two, good for the good of my own health, I would prefer a 50-60 minute winner. 2-1, Yeah, maybe yeah, 2-0, that's right. and then they score like maybe 90th minute, something like that, so that they don't get the momentum and all that. यार आपको सिर्फ 2-3 मिनट मिलने वाले हैं, चलो खेलो और खत्म करो और जाओ घर पे अपने. So that's what I would prefer, but let's see how is it gonna be like. So चलिए ईशान भाई, thank you so much for this. Sure. आप कल watch along के लिए आ रहे हैं? आप कैसा है आपका? I am not sure. I will let you know. ठीक है, चलिए कोई बात नहीं. Let's see. Okay, guys, thank you so much everyone for joining in, and please do join in for the watch along tomorrow at 9 o'clock. And again, thank you so much. And please do subscribe, like, share, whatever, all the good stuff. And we'll see you all tomorrow. Thank you so much, Ishan bhai. Pleasure having you here. And hopefully Pleasure is we'll all mine, brother. soon. Sure. Pleasure is all mine. Thank you. Have a Thank you. good night. Have a good night. Thank you. Bye bye.